Okay, now this is the another part of the reflection of light. So in this video we will learn about reflection from spherical mirror. We have learned about reflection from plane mirror and the characteristic of image found by the plane mirror. Now it turns to know about the spherical mirror, right? So there are two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. You know the shape of spherical. This is the 3D visual shape, 3D shape, but it is not a solid sphere. We talk about the spherical cell of glass. हिंदी में स्फेरिकल सेल को बोलते हैं सेल SHE-double-L, not CE-double-L. SHE-double-L means कोष, खोखला, hollow sphere. So we have a hollow sphere of sphere. We have a hollow sphere, and we cut the hollow sphere. So we are left with some portion of the sphere. We do not cut the sphere diametrically. We cut the sphere parallel to the diameter, but the portion we left with is a very curved surface. So the portion we left with is called curved surface, and this curved surface has two side surfaces. One is known as concave surface and another is known as convex surface. The surface which is inward to the center, or that the surface which is a ditch, एक गड्ढा सा होता है, which is inward to the center, is called the concave surface. And opposite to the concave surface we have convex surface, which is bulged out, जो उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, which is the surface which is away from the center of curvature, which is away from the center of the sphere, is called the convex surface. So we have convex surface here and concave surface is here. So we have concave surface and convex surface. Now when we call it convex mirror and concave mirror, when one of the surface is a reflecting surface, then this spherical surface is called spherical mirror, and the surface which is reflecting, that means which reflect light, is known as that type of spherical mirror. It means that when the concave surface reflects light, then it is called concave spherical mirror, or simply concave mirror. When convex curved surface reflects light, then that spherical mirror is known as convex mirror, right? So this is the basic thing, right? So this is concave mirror because its reflecting surface is concave surface, or you can say the inward surface which is towards the center is reflecting surface, so it is concave mirror. And the surface which is away from the center of a spherical cell, or you can say that spherical center of curvature. So this surface is away from the center of curvature. So, and this is the reflecting surface. Now also we can call it convex spherical mirror, right? So we have following terms, and we have to know all about spherical mirror. So first term is these are the essential term, or this is the terminology we use further to use mirror formula, magnification, and to know the specific thing of image, the specific important terms about image, right? So first is aperture, another is pole. So what is aperture? It is the diameter. It is the diameter of the circular rim of the spherical mirror. It is the diameter of the circular rim of the spherical mirror. That is, A is the aperture of the
aperture of the mirror, right? So if we have a mirror like spectrum like this, then this is the aperture. Now what is the pole? It is the midpoint of the reflecting surface of the mirror. The midpoint of the middle point of the reflecting surface is known as pole. Now center of curvature. The center of the spherical cell, of which the mirror is a section of which the mirror is a part is known as center of curvature. इसका कहने का मतलब क्या है, या जो मिरर है वो जिस स्फेरिकल सेल का पार्ट है उसका सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, राइट? Similarly for this, right? So in both case we use same terminology, but in the case of concave and in the convex some different things can be found, or some different language is used, because there is some difference between a reflection of a ray of light, because the focus of the convex mirror is behind the mirror, center of the curvature is behind the mirror, but in the case of concave mirror we have focus in front of the mirror, center of curvature in the front of the mirror. So these are some basic difference between them, right? Principal axis, but the concept is same, right? Principal axis, the line joining the pole and the center of curvature, the straight line joining the pole and center of curvature is known as principal axis, right? Now what is the principal focus? This is a very important thing. It is the point focus, principal focus. It is the point on the principal axis. It is the point on the principal axis. The point on the principal axis at which the parallel beam of light incident at which the reflected, ऐसे कह सकते हैं, it is the point at the principal axis, on the principal axis. It is the point on the principal axis at which reflected rays meet or appears to come from, at which reflected rays meet or appears to come from, at which, from which, in this case from which reflected rays, from which reflected rays appear to be coming from, right? When the incident rays are strikes, or when the beam of light incident parallel to the principal axis. So do not get fizzy. In a simple language we can say, when the beam of light, when the ray of light incident parallel to the principal axis, and after reflection they meet at a point on the principal axis, or they appears to come from a point at the appears to meet at a point ट्रक की आवाज भी आ रही है, एक मिनट। चल यहाँ पे देखते हैं, इस केस में दोनों केस को एक साथ मर्ज करके डेफिनेशन दी जाती है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे अलग करके बता देते हैं। देखो, when incident rays or when a ray of light, when a parallel beam of light incident, parallel होना जरूरी है, ठीक है? पैरेलल नहीं होगा तब नहीं, हर लाइट रे इंसिडेंट हो
फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाए या किसी एक पॉइंट से होके आते दिखाई दे, तो वो वाला पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये बोलना जरूरी है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट on a spherical mirror, then after reflection the reflected rays is meet at a point on the principal axis and that point is known as principal focus. इस केस में क्या होगा, reflected rays seems to come from a point on the principal axis and that point is known as principal focus. अब दोनों बातों को और लगा के मर्ज करा जा सकता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, बहुत लंबा नहीं जाना। फोकल लेंथ जब फोकस डिफाइन हो गया तो फोकल लेंथ डिफाइन हो जाएगा। सो एंड एवरी डिस्टेंस इज कंसीडर्ड फ्रॉम पोल, दैट इज मिडिल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो द लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज focal length, right? So this principal focus is defined as small f or capital F, and principal focus for our spherical mirror, principal focus f is equals to r by 2. What is r? This is the radius of curvature. In focal length is half of the radius of curvature. And what is the radius of curvature? The distance between the pole and the center of curvature is known as radius of curvature. So this is the radius of curvature. This is the focal length. Focal length is noted as small f. Now, rule for image formation by ray diagram. अब image formation हमें करना है by ray diagram. रे डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे ये रे डायग्राम बना हुआ है। रे डायग्राम बनाकर हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम यहाँ देख लेते हैं। मोटे मोटे 3 से हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हमने देखा जब फोकस को डिफाइन किया था वही चीज है। तो व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it goes from the focus, then after reflection it goes from focus. So this is the first rule. कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से उस पॉइंट से होके आती हुई दिखाई देगी। ये कॉनकेव मिरर का केस है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो हम कॉनकेव में बता दे रहे हैं, कॉन्वेक्स में आप समझ जाइएगा। ठीक, अब दूसरा इसी में ही हम जोड़ सकते हैं, और व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द फोकस रिफ्लेक्टेड रेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल। इसी में हम जोड़ सकते हैं, अगर कोई लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट होती है, यानी फोकस पॉइंट पे गिरती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई, फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसको मैंने दोनों एक ही इंक्लूड कर लिया, तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसमें बना देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा फोकल हो गया, और ये जितनी डिस्टेंस है ना, फोकल पॉइंट जो होता है वो बीच में होता है, सी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच होता है, बिकॉज दैट इज इक्वल्स टू r/2 होता है। ठीक है, लेकिन अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। बहुत बड़ा अपर्चर होगा तब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि r/2 स्मॉल अपर्चर के लिए है। और जब मिरर फार्मूला बताया जाएगा थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन मिरर फार्मूला डिराइव आपके सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड में था। ठीक है, तो आपको में डेरिवेशन आते ही है, लेकिन कोशिश करना बुक में होगा तो देख लेने के बाद जरूर। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होता है इससे। तो हाँ, क्या बोला, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होकर लौट जाएगी। तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर। जब पोल पे करेगी तो ये लाइट पोल पे करी
इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात होगी भाई, जो पोल है, पोल पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्चुअली क्या है, उस पॉइंट पर क्या परपेंडिकुलर, ये जो PC है वो नॉर्मल की तरह काम करेगा। ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर लाइट ऐसे पोल पे गिरेगी, जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ बना दो, यही रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पाथ होगा। ये बेसिक 3 रूल है। ये तीसरा वाला बहुत ज़्यादा कम यूज होता है, ये दोनों से काम बना लेते हैं, या इसका भी यूज करके भी काम बन जाता है, कहीं तीनों भी खींच सकते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए मैक्सिमम 2 लाइटें चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।